Most of the students, those who had joined me, are very well aware of it, and I can vouch that they understand. बहुत सारे जने जो मेरे साथ आज जुड़े हैं वो जानते हैं कि अभी तक हम क्लासेस का किस सेशन पे क्या हमने आखिरी पढ़ा था। नहीं याद हो तो जल्दी से याद दिला देती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बीते हुए कल के बारे में, एक वक्त जो गुजर चुका है जिसको हम कल पे डालते हैं। बीता हुआ वक्त मतलब अभी मेरे जिस कंट्री में मैं हूँ वहां पे 1 बज रहा है, तो सुबह से लेके अभी तक के वक्त जा चुका है। एक पास्ट टाइम की बात हो रही है। इसके लिए हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल में लेना पड़ता है? जो भी शब्द हम इस्तेमाल में लेते हैं वो वर्ब पार्ट होता है, और उसको हम कैसे चेंज करते हैं। आपको याद हो तो रूट वर्ड के अंदर डी लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, आईईडी लगाएंगे, वाई को ड्रॉप करके। ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग चले जाते हैं, गुड, वेल, बिल्कुल टेंस को चेंज कर देते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव नॉट की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस से रिलेटेड। ओके, नाउ बिफोर आई गो अहेड, एक आज अपने एक पर्सनल बात आपको कहना चाहती हूँ। एज यू नो, मेरे पास एक पेट है और उसकी आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ही इज बीन वॉमिटिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो शायद मेरा फोकस प्रॉपर नहीं हो पाए। हो सकता है कि मैं सेशन थोड़ा जल्दीबाजी में खत्म करूं। अपॉलॉजीज। शुरू करने से पहले ही मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ इफ एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ही इज जस्ट स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी बट ही इज नॉट वेल। सो with all your permissions and with the kind of thing I've just said, I'm sorry for saying it, but चूंकि मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ तो मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी। थैंक यू प्रभात टाइगर, लकी सिंह, धार्मिक सोलंकी, जैनाब, फतिमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जैनब। लेट्स गो हेड एंड लेट्स चेक इट आउट। नकारात्मक मतलब नॉट। अब ये क्या है? दे वर नॉट एट होम लास्ट नाइट। सो इफ यू रिमेंबर, हमने पास्ट टेंस में क्या चीज सीखी थी? प्रो मेंबर्स, आप इतने प्यार से मेरे से जुड़े हैं, कुछ भी आज गलती हो जाए ना, प्लीज डोंट माइंड इट। हम कल फिर जुड़ेंगे and we'll surely give a chance everybody to speak. Okay, so here what am I trying to say? If you remember in the last sessions there, I was talking that there are some words which are associated with the past tense, like I did a work yesterday or day before yesterday, or the work got finished tonight, or we met last night. Now these words these are vocabulary, these are such vocab which tell us something about a time which has got over. It is talking about past. ये कुछ शब्द थे। अब इनकी प्लेसिंग हमने कैसे करी? सेंटेंसेस के साथ करी। यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट क्या है? दे। दे क्या है? प्लूरल है। कौन सा प्लूरल है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है। व्हाट इज दे? दे इज सपोज्ड टू बी द प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन। आई, यू, he, she, it, and then they. We, first person, and then they is supposed to be the third person there. So what are we saying? Instead of saying he was not at home last night, here it's talking about the plural. किसी के परिवार में गया होगा, they were not at home last night. Suppose you went to meet somebody. So we are trying to say that they were not present there. So we are trying to make a statement which is negative. Now where am I placing it? I am placing just after W-E-R-E, were, and then I place it and say they were not. He was not. I am not. Am नहीं होगा, I was not. So मैं क्या कर रही हूँ? मैं सब्जेक्ट देखती हूँ, सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब लगेगा सिंगुलर। कौन सा वाला? पास्ट फॉर्म का। So what do? I understand, okay, the subject is singular, place the singular verb, but it's going to be the past form. If it is plural, I place the verb plural. And there are only two verbs. Remember, the helping verbs always is going to be was and were. With the simple present tense, simple past tense, we don't use was and were. I hope you remember that. But here what is happening? We are trying to say about a person, about a group of people, more than one plural form of it, that they were not, negative not, place home. So we're putting a preposition at, and we're trying to say something which has happened in the past to denote it. I can also say they were not at home. कोई गलत नहीं है ये स्टेटमेंट, बट मैं जैसे लास्ट नाइट की बात करती हूँ उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ they were not at home, हो सकता है अभी की बात कर रही हूँ, but the moment I put last night, it gives me a specific indication there. I was not happy yesterday. So what did I do? With the subject being plural third form, I put they with were. I have to keep we were also.
But here it is singular person saying I, first person, was. And where do I put my negative? After was, I place not. I was not happy. Perfect sentence. But because it is past, I said बीता हुआ कल. I was not happy yesterday. I hope till this place it is clear to all of you. Nitin Srinivas, ma'am, please give him first one ordinum MD. After half an hour, give him acidity 150. Nitin are you sure about it? Nitin Srivastav, thank you for posting the remedy for my little child there. Thank you so much. Okay, so now there is something that I want to ask you all. Is this section clear of using the not? Because I'll just start with my exercises. I think it's Neha who has joined me, Alpana Sharma, Anupam Jaiswal, Sumaya, Dhananjay, Kunal, Pratap Singh, Priya, Purva, Srinivas, Sumit, Tarla, and Vishakha. All those on the pro. पहले ये बताओ, past समझ आ गया, negative past समझ आ गया, simple sentence समझ आ गया, first person, second person, all this is clear to all of you, those who are pro members? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Anupam Jaiswal. Okay, Pratap, okay. Anupam Jaiswal, are you clear? Kunal? Yes, Kunal, please say. Yes, ma'am. Clear. Okay. Anupam Jaiswal, is it clear? कोई issue है तो बताइए. No, ma'am, no issue. Okay, let's get started. Anyone, Purva, anything you have to say? एक बार आ जाओ, नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगी. Okay, let's get started. Come. आ जाइए. So let's understand this. साधारण भूतकाल के नकारात्मक वाक्यों में ये मैंने आपको समझाया है. Was और were का हम इस्तेमाल करते हैं. The weather was not nice yesterday. So where did I place it? Just after the helping verb. Now, मैं कल स्कूल गया था. कल स्कूल गया था. So वो का हमने क्या सीखा था? If you remember, there was this whole list of root word with the past form. If you remember it. So I go to school. गो मेरा क्या है? रूट वर्ड है, और उसको पास्ट में करने के लिए मैंने बस गो हटा दिया. वेंट. आई वेंट टू स्कूल, ये मेरा पास्ट चला गया, राइट. बट मैं कल स्कूल नहीं गया था, मुझे इसको नेगेटिव करना है. तो नेगेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई डिड काम में लेना पड़ेगा, और वी डिड नॉट. दैट इज ऑल्सो प्लेसेबल. सो व्हाट डू आई डू व्हेन आई हैव टू यूज फॉर द पास्ट फॉर्म? ओके, व्हेन आई हैव टू यूज फॉर द पास्ट फॉर्म, जहां पे आप सामान्य भूतकाल वाक्य में जिसमें क्रिया होती है, उनमें वन, आई, वी. क्रिया होने का मतलब है was और were का इस्तेमाल. बेसिक रूट वर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं. जहां पे फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पर्सन वी, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल, ही और शी थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है, इन सबके साथ में हम लगाते हैं डिड नॉट. आई डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, शी डिड नॉट. So the moment I put did not there is taking me to the, I did not go to the school. I did not, she did not go to the school. She did not listen to me or go. So what am I trying to emphasize here is, I went to school is a simple past tense. I did not go to school is telling me, and using usage of my verb is helping verb and the main verb. दोनों ही मैंने इस्तेमाल में कर रहे हैं यहाँ पे. Did not का प्रयोग होता है और क्रिया को हम वर्तमान रूप में लिखते हैं. So when I am using the did aspect there, तो आप इसको क्लियरली समझो कि जब मैं did का इस्तेमाल करती हूँ did not का, तो जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वही इस्तेमाल होगा. I did not go, went नहीं लगाएंगे हम वहां पे. Okay, I hope it is clear. Now look at this. It's a very important slide. Take a snapshot of it. It says past simple है एक section और दूसरा है past simple negative में. जैसे ही मैंने बोला they went out, they did not go out. When I say he studied, ये सब simple past tense है. Went, studied, bought, saw, played. This we all have practiced with me. Most of my students have practiced with me in the classes of Thursday, Friday, and Saturday. And Monday is a rollover thing of the same thing. The only thing that we have introduced right now is use of not. अब not का जब इस्तेमाल करते हैं तो बेसिक जो आपने past tense के
वर्ड्स लिए थे उसमें आपको क्या चेंज करना है, शिफ्ट क्या करना है. दे वेंट की जगह दे डिड नॉट, ही स्टडीड ही डिड नॉट, आई बॉट आई डिड नॉट, वी सॉ वी डिड सी. सो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सारे लगाओगे और डिड नॉट इसके साथ में लगाओगे जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं, ना की नकारने की बात करते हैं. शी प्लेड, शी डिड नॉट प्ले. आई डिड नॉट गो, वी डिड नॉट सी, आई डिड नॉट बाय, he did not study, they did not go out. Anyone, any query till this place? No, ma'am. Thank you. Okay, let's go to the next and now try. Please come forward. No student has given the correct answer. क्या हो गया? Only Kunal and Dhananjay names have come up right now for me. Kunal, Ma'am, please I come. gave, I Ma'am, I gave, gave right answer. yeah, ma'am, I gave right I have answer. got I only gave the Neha's right name. answer. Dhananjay, Baljeet, Ma'am, Kunal. I also and gave right Sai. Ma'am, I also. Great, great. That means your leaderboard would have taken care of this. Kunal, please come forward and read the sentence for me. She did not play badminton last Sunday. Very good. So what are the words of past form that you can see right now? The words of past form. जिसको हम past की जैसे देखते हैं, वो कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं आपको कुणाल? डिड है वो हम पास्ट फॉर्म में ले रहे हैं. लास्ट संडे है वो भी पास्ट डिनोट कर रहा है मेरे को, है ना. आई डिड प्ले बैडमिंटन, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने खेला बैडमिंटन, तो पास्ट में जा चुकी है वो चीज. लास्ट संडे खेला था मैंने, तो लास्ट जो वर्ड लिखा है ना LAST, ये वर्ड डिनोट करता है मुझे पास्ट के बारे में. ओके कुणाल, डैश कम ऑन, आ जाइए आगे आ जाइए. कम ऑन. शी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन लास्ट संडे. यस प्रभात. BK Soumya, please come forward and read the sentence. Dhananjay, Vishaka, Pratap, Apna, Neha have given us the correct answer. Please come forward. We did not go to the cinema last month. Okay, so these days we don't go to cinema. Most of the people don't go to cinema. Do you all? सब binge watching ही करते हैं ना, सबके फोन में टीवी पे कुछ ले रखे होंगे, उसी को करते हैं. तो अब हम इसको सिनेमा की जगह कुछ और लिख सकते हैं अगर मैं डेस्टिनेशन को चेंज करना चाहूँ. सौम्या. Yes, ma'am. We did not go to the park last month. We did Very not good. go to the restaurant last month. So We did not go to the restaurant last month. We did not go to the park last night. We did not go for a class last month. Yes, Shopping mall last we did not go to the shopping mall last. Absolutely. So क्या किया, मतलब मैंने क्यों ये बात सौम्या के लिए रखी कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेस्टिनेशन को हटाना है और वो सेंटेंसेस मेरे बहुत सारी जगह काम में आ सकता है. लेकिन अब जैसे मैंने सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दूंगी तो उसमें भी हमने क्या सीखा है, वी है, दे है, आई है, ही है, शी है, सब में मुझे डिड नॉट और प्लस बेसिक वर्ब लगाना. मतलब मैंने सब्जेक्ट लिया, अगर मुझे उसकी फ्रेमिंग समझनी है तो सब्जेक्ट लिया, डिड नॉट लगाया, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया एंड देन द ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. लेकिन अगर उसके साथ में मैंने एडिशनल लास्ट नाइट जैसी चीजें इस्तेमाल में और ले ली, येस्टरडे इस्तेमाल में ले लिया, इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक. और कई बार हमें कहना पड़ता है स्पेसिफिक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड ट्राई दिस आउट. Yes, Prabhat Tiger, she did not play badminton last Sunday. Parthi Patel did not go. Okay, Vishaka, please come forward. Yes, ma'am. They were not in the office. Okay, thank you so much, Vishaka. Alpana, Pratap have given us the correct answer. I am calling all these names. Please come forward. Dhananjay, Tarla, and Priya, please come forward. Hello, three of you. मैम क्या दिक्कत हुआ तरला? नहीं हुआ कुछ नहीं, वो जल्दी जल्दी में आंसर दे. Okay. Dhananjay, what about you? मैम जल्दी के कारण मैम. जल्दी क्यों करते हो? फर्स्ट आने के लिए. सेंटेंस तो पूरा पढ़ोगे ना, 4 ऑप्शन है वो तो सही पढ़ोगे. देखो सिंपल स्ट्रैटेजी को अपनाओ. दे के साथ did नहीं आएगा. दे डिड नॉट क्यों नहीं यहाँ आएगा? verb बेस नहीं वर्ड नहीं है ना, दे के साथ क्यों नहीं आएगा प्रिया? लेकिन तुमने वर्ब नहीं लगा रखा ना. दे के साथ डिड लगाओगे ना जब तुम्हें साथ में
एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा ना. दे डिड नॉट गो टू द ऑफिस. गो लगाया है ना तुमने. यहाँ तुम्हें दिख रहा है इस सेंटेंस में? हाँ वर्ब नहीं. नहीं है ना. बस वही तो लॉजिक है. उस लॉजिक के साथ सीखोगे तो आसान रहेगा. यस, हु इज दिस? प्रिया. मैम इन हिंदी अच्छा, किस वे ऑफिस में नहीं थे. इन हिंदी यू वांट वे ऑफिस में नहीं थे. हाँ, करेक्ट. ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आ जाओ, ट्राई करो. गिव मी अ सेकंड, आई एम हियर ओनली. लियो, क्या हो? ठीक है, बस और 10 मिनट है ना. So, which is the next sentence we have? Fatima, Vishakha, Tarla, Srinivas. आ जाइए. Nitin, Sapna have given us the correct answer. Please come, Srinivas. मैम फिर से गलती हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा समझ. अभी बताते हैं, लेकिन श्रीनिवास कहाँ हो आप? Are you there, Srinivas? He seems to be busy. Fatima, will you please come forward? The train was Okay, Srinivas is here. Srinivas, please read this. yes. The train was not late last night. The train was not late last night. Okay. The train was not late last night. Okay. क्या कौन है यहाँ पर जिसने मुझसे सवाल पूछा? मैंने मैम. नाम बता दो. प्रिया. प्रिया एक्चुअली मुझे ना पूरी शिफ्ट करनी पड़ती है स्क्रीन, इसलिए बोलना पड़ा. अब आपने एक स्लाइड पे ध्यान दिया. ये सेंटेंस को पकड़ के रखो. ऑल दोस हैव एन इशू. आई थिंक धनंजय आल्सो गिव द रॉन्ग आंसर. सौम्या, अनुपम, जतिन, नेहा. Okay, just keep the sentence in your right somewhere or keep it in your mind. The train was not late last night. ठीक है, sentence है the train was not late last night. And what is the rule here we learned right now? I, we, they, he and she. What do we use? Did not. यहाँ पे it लिखा हुआ है कहीं? नो मैम. इट को हम कोई नाम देते हैं ना, किसी का ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट था तुम्हारे सेंटेंस में? ट्रेन. इट वाज नॉट लेट लास्ट नाइट. तो यहाँ पे इट तो लिखा है नहीं, तो मैं डिड नॉट तो लगा ही नहीं सकती ना. यस मैम. जब मैं डिड नॉट नहीं लगा सकती तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा? वाज वर. व्हाट द पॉइंट ना? समझ में आ गई अपनी गलती? ओके मैम. ओके, सिंपल है ना. इसीलिए मैंने आपको कहा, ये जो आप स्लाइड पे देख रहे हो, इसमें मैं थर्ड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल भी है. ये सबके साथ में मैं डिड इस्तेमाल कर सकती हूँ. लेकिन यू के साथ अभी हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया है आपको, तो कंफ्यूजन में मत जाओ. जितना जितना करा रहे उतना इतना चलो. अब जैसे यहाँ पे द वेदर है, वेदर इट में आएगा, ट्रेन भी इट में आएगा. ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द बेसिक फॉर्म ऑफ इट. आ जाइए. अब ध्यान से, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दिया करो और फिर वर्ब पे दो एंड फिर आगे बढ़ो. उसने कल रात टीवी नहीं देखा. गुड धनंजय. थैंक यू जतिन. ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम जतिन. शी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन लास्ट संडे. प्रभात और सेंटेंस टाइप करके भेजो भाई. एवरीबडी ऑन द चैट देयर. धनंजय, विशाखा, अल्पना प्लीज कम फॉरवर्ड. कुणाल, प्रताप एंड बलजीत आ जाइए. Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून अल्पना. We did not watch TV last night. वेरी गुड. सो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया, थोड़ा बताएंगे अल्पना? Ma'am, subject he. ओके, हेल्पिंग. यहाँ पे डिड नॉट हमारा नेगेटिव दे रहा है सेंटेंस सेक्शन फॉर पास्ट फॉर्म. Yes, ma'am. Did not is past form in negative. Okay, and which is the root form of the verb that is used here? Watch. Very good. Shabash. Any other word which tells me for an action which has happened? Ma'am, last night. Wow. Kudos, Alpana. Shabash. I hope everybody understood what she said right now. उन्होंने क्लासरूम साफ नहीं किया था.
Okay, if you are a newbie Paras in the class, I will request you to please stay aligned with us at least for a week. Just check it out how we operate in the class, and then we can be pally with each other. I'll talk about you about this later on. So, Kunal, Dhananjay, Tarla, please come forward and read this. Kunal, Dhananjay, Tarla, Arpana, Neha, and Fatima. Please come forward. उसने क्लासरूम साफ नहीं किया था. Did not clean the classroom. और अगर मैं कहती हमने क्लासरूम साफ नहीं किया था, Did not clean the classroom. अगर मैं बोलती उसने क्लासरूम साफ नहीं किया था, He didn't clean. didn't नहीं, he did not, हाँ didn't भी बोल सकते हो, it's a contraction you are doing, ठीक है, he didn't clean the classroom, ठीक है, I don't disagree with that. आ जाइए. Thank you. तुम घर पर नहीं थे. अब कितना देखिए ना, इससे ज्यादा सिंपल और कॉमन सेंटेंसेस कहाँ से लाएं? कितना कॉमन है. We did not go to college last Monday. अच्छा, so where were you roaming around? Very good, Prabhat and Jatin. Continue. So Fatima, please come forward and read the sentence. Fatima, Dhananjay, Pratap, Kunal, Baljit and Sapna. Tarla, Priya, Sumit, क्या हो गया? तुम घर पर नहीं थे. Now it's with you. Ma'am, you were not at home. Okay, thank you so much. Tarla, Priya, please forward. आगे आओ. Ma'am, by mistake. तरला हो गया. तरला आपका by mistake. Yes, ma'am. And what about you, Priya? Priya, Yes, ma'am. क्या हुआ? गलत By कैसे? mistake, ma'am. तीनों You are not at home आएगा because मैंने by mistake बाय मिस्टेक कैसे हो गया? जैसे शिफ्ट करो तुम बाय मिस्टेक कर देते हो. यू को हमेशा प्लूरल पे रखते हैं ना, गलती कैसे हो सकती है? कुछ लॉजिक्स तो याद रखने ही पड़ेंगे ना. When I Yeah. said, हाँ तो यू तो कभी भी हम सिंगुलर ले ही नहीं सकते ना. Yeah, वॉज ma'am. आउट हो गया, डिड नॉट इसके साथ आता नहीं है, तो बचा क्या आपके पास में? डू नॉट आ नहीं सकता, वॉज आ नहीं सकता, डिड नॉट आ नहीं सकता, तो बचेगा क्या फिर तो वरी बचा ना. Yes, ma'am. अब भी समझा. I understood. हाँ, सब जने समझो इस बात को. जब भी हम आए, वी, दे, ही और शी का इस्तेमाल सब्जेक्ट में करते हैं तो डिड नॉट लगाना है. अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, यू आ जाए या इट आ जाए आपके सामने, तो वॉज और वर लगाना है. Yes, और ma'am. डिड वालों के साथ में रूट वर्ब लगाना मत भूल जाना. आ जाओ. मैं पिछले सप्ताह भारत में नहीं था. ओके पारस, यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम. मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ आपकी क्लास. बिल्कुल लाडली बिंदर, ये लीजिए प्रो इनवाइट आपके लिए. प्लीज कम एंड ज्वाइन द क्लास, यू आर ऑलवेज वेलकम. धार्मिक, मैम आई के साथ did आएगा ना, बट क्या हो गया? यहाँ मैं verb नहीं पिछले है. सप्ताह भारत में नहीं था. आई डिड नॉट कैसे होगा यार? किसने बोला अभी? ये कौन था एकदम से स्पॉन्टेनियस? प्रिया मैडम. प्रिया मैडम रुको आप 1 मिनट, अभी आपको पक्का कर देते हैं, है ना? 1 मिनट रुको. yes, sir. जस्ट मैं भी कंफ्यूज है इसमें. अच्छा श्रीनिवास, इज देयर एनीवन एल्स हु हैज अ कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके प्रताप, आके रिजॉल्व करो जरा सिचुएशन को. आ जाओ प्रताप. मैं पिछले सप्ताह भारत में नहीं थी. कहाँ गए? गोल हो गया. नहीं, उनका कुछ नेट इशू. हाँ प्लीज बोलो प्रताप, प्लीज कम बैक अगेन. यस मैम. हाँ मैं पिछले सप्ताह भारत में नहीं थी. हाँ. I was not in India last week. Okay. Now, I think 2-3 students have a confusion in this. पूछो प्रताप से क्या पूछना है. मैं बैठी हूँ, प्रताप जवाब देंगे. प्रताप एक बार ट्राई करो आप. हाँ पूछो क्या सवाल है. प्लीज कम फॉरवर्ड. प्रताप, हेलो प्रताप. Yes ma'am. Yes. प्रिया, I am प्रिया. I did आएगा. हाँ, मैं के साथ I did आएगा, बट यहाँ I was करेक्ट हो रहा है. I did इनकरेक्ट आंसर. I was you के साथ वर.
देखो भाई, I got नहीं, it, यहाँ but देखिए, यहाँ एक्शन का काम नहीं हो रहा है, इसमें वर्ब हाँ, नहीं है ना, इसलिए आपका डिड नॉट नहीं आएगा। धनंजय ने कितने प्यार से और धीरे से बात समझा दी। अरे मैडम प्रिया, okay, उसमें okay. एक्शन वर्ड कहाँ दिख रहा है तुमको? Yes, ma'am. वर्ब Yes. कहाँ है? तुम्हें जब डिड नॉट इस्तेमाल करना है ना कभी भी, तो तुम्हें रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड नॉट के बाद लगाना ही पड़ेगा। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट स्लीप, Yes, आई डिड ma'am. नॉट स्टडी। अब जब वो नहीं है वहां पे वर्ब, तो वो सिंपल पास्ट पे चला गया ना। Yes, I ma'am. was not. Thank you, ma'am. Okay, clear? Okay, okay, okay. Clear. Someone else also, Srinivas. Okay, are you thank you clear, so much, ma'am. Srinivas? Okay. No, it's okay. अपन क्लियर हो रहे हैं. Don't feel, सीखने ही आए हैं यहाँ पे सब जने. चलो, आ जाओ. Jatin, where were you? Prabhat last. Paras, you were at home and I called you. Prabhat, Tiger, India. Okay, Dharmik, then you should have told me that take this ma'am session. Huh? But better late than never. I was not being able to. Okay, so all those pro learners, this is for you. I'm sending the pro invite. If you want to join me, you have to type VWNA 1010. कहाँ टाइप करेंगे? इस लिंक को खोलो, जाओ, वहाँ कुछ सवाल पूछेंगे. उसमें ये भी पूछा जाता है कौन सी टीचर है, उसका क्या कोड है, वो कर दीजिए. बहुत सारी टीचर्स आती हैं, सबको ज्वाइन करके देखो, जो पसंद है उसको ज्वाइन कर लेना. चलो, कुणाल, तरला, अल्पना, जतिन, नीरज, गगनदीप, फातिमा जी, प्रताप, ओ माय गॉड, सुमित, क्या हुआ तुम सबको? मुझे कुछ नहीं पता था. मैं वर्ब की फर्स्ट Ma'am, फॉर्म no 9 है, मैं spelling भूल गया, गलत सुबह है. मैंने याद करी है वर्ब की फॉर्म में. लेकिन अच्छा, किसने? प्रताप, आपने आंसर कौन सा दिया था? मैंने फर्स्ट वाला दिया, पर ये फोर्थ वाला सही है. हाँ, वर्ब तो में 9 की फर्स्ट फॉर्म KNOW है फर्स्ट फॉर्म. हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म कैसे फर्स्ट फॉर्म है? बेसिक रूट वर्ड ही नो है ना, KNOW. शब्द ही वही है. मैंने आपको एग्जांपल्स में कितनी बार कहा है कि मैंने नमक लिया, जो सादा नमक है, अब उसमें मैं Yes, और ma'am. 4-5 इंग्रेडिएंट मिला के कुछ अलग उसको फ्लेवर दे रही हूँ. यस मैम. जो ऊपर फर्स्ट वाली है, जो फर्स्ट स्लाइड में, वो सेकंड फॉर्म है उसकी. हाँ, तो वो फॉर्म्स में मत जाओ. इसीलिए जब रटते हो ना चीजों को, बिना समझे चीजों को रटोगे ना, तो फिर गलती हो जाएगी. समझ के समझो चीज को, सबके लिए. फातिमा ऑल्सो, प्रताप, सुमित, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. मुझे कुछ नहीं पता था. आई डिड नॉट न्यू गलत है, क्योंकि जानना, पता करना, किसी चीज का मालूम होना, मुझे पता है. आई नो, KNOW शब्द है, वो बेस है. तो मैं जब डिड लगा रही हूँ तो उसके साथ नो ही तो लगाऊंगी ना. आई डिड नॉट नो एनीथिंग. मैम, culprit is my touch screen, not mine. चलो, हिंदी में पढ़ देती हूँ. मैं घर नहीं जाना चाहता था. I told you yesterday. I think you have a short memory. धार्मिक, सोलंकी. ओके, कंटिन्यू. तुम लोग आपस में बात कर रहे हो ना, प्रभात और तुम. ठीक है, कंटिन्यू डूइंग दैट. बीके सौम्या, बीके सौम्या, पारस. हाँ, बीके नहीं, बलजीत, मैं सिर्फ नाम कह रही हूँ जो सही आ रहा है. I would like to call somebody else. Wait. Purva Navale, could you please come forward to give me the answer? Let the answer pop up. आपको नहीं आता है, आप इंतजार करें, पर आप मेरे को पढ़ के तो बता दीजिएगा. पूर्वा, are you there with me, Purva? Yes, ma'am. हाँ, you will have to give me this answer जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है. मुझे घर नहीं जाना था. क्या आएगा यहाँ पे? आपको पता है? I did not at home. I did not At home. मैं घर नहीं जाना चाहता था. ओके, धनंजय, कैन यू प्लीज हेल्प her? I didn't want to go home. हाँ, I didn't want to go home. कॉन्ट्रैक्शन कर दिया. I didn't want to go home. अब देखो यहाँ पे, आपने शायद हमारी बातें सुनी नहीं थी. मैं को अंग्रेजी में कहते हैं I, घर को कहते हैं home, नहीं not, जाना go, चाहता था, चाहता is want, और था जो है वो मुझे पास्ट के लिए बताता है. अब यहाँ पे मुझे जाना शब्द मिल गया जो कि वर्ब है. तो जाने को हम, जाने को कहीं जाने के लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं गो.
अब मुझे कैसे लगाना पड़ेगा इसको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का आई के साथ क्या लगाना है? डिड नॉट। क्यों लगाना है? क्योंकि वहां पे मेरे पास जाना लिखा हुआ है, तो गो शब्द है, वर्ब है मेरे पास, तो मैं डिड नॉट लगा सकती हूँ। आई डिड नॉट, बेस फॉर्म रखो जाना का, वांटेड नहीं होगा, वांट टू गो होम। आई डिड नॉट वांट टू गो होम, मैं घर नहीं जाना चाहता था। वे हमारे घर नहीं आए थे। Paras, I am just translating Hindi, English, everything. That's what I said, Paras. Don't just jump to ask questions there. Just sit tightly, roll with us for another 4 classes, and then put your questions. I'll surely resolve it. But you will have to please sit there and listen what we are doing. I know, Paras, I think you are very well aware of it. That's the reason you have typed Paras, verb is want. Okay. मैम ये क्या आंसर आएगा? धनंजय, They were not. एक सेकंड, वेट। धनंजय, अक्षता, धार्मिक, तरला, एजे एंड जतिन। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी पेशेंस रखो, ये सेंटेंसेस में टाइम लगता है, लिख लेने दो। हमने टाइम दिया है ना, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है आज। As I said, he is not well. He is just lying down near me. यहीं पे बैठा हुआ है वो। ओके, थोड़ा इंतजार खत्म करते हैं सबका। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट इवन ट्राई दिस, क्योंकि गलत की भी स्लाइड मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है, मतलब आप लोगों ने अपना हाथ रोक लिया। मैम ये टाइप ही नहीं हो रहा है और आगे नहीं जा रहा है। अच्छा, मैम बोल दूं मैम? हाँ बोल दीजिए प्लीज। They did not come to our home. Okay, so Dhananjay has given us the answer. They did not Come to our home. Okay, so past form of come is Dhananjay? Did मैम? I'm saying past form of come is? मतलब मैम समझे नहीं। Past क्या होगा? कम शब्द का, COME का। कम का came मैम, came. ठीक है, you got the question ना, ठीक है। Now everybody understood? Plural form third person, they, फिर did not लगाओ। कम क्या है? Base form of the word, मतलब ये शब्द ऐसा ही बना हुआ है, कम। कम क्योंकि एक एक्शन है, इसलिए इसको वर्ब में हम डालते हैं। टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी रूट वर्ड होगा ना, वो बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म हमेशा यथार्थ प्रेजेंट पे छोड़ दिया जाता है। उसमें कोई चीज ऐड करते हो तो ईडी या डी या आईईडी लगाओगे तो पास्ट में चला जाएगा। इसी को मैंने विल कम कर दिया तो ये फ्यूचर पे चला जाएगा। आई विल कम, आई विल नॉट कम, आई डिड कम, आई डिड नॉट कम, बस इतना सा चेंज होता है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, इसीलिए वोकैबुलरी को जितना बेहतर करोगे उतना अच्छा होगा। ये आखिरी सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। Okay, Paras, I appreciate that you wanted a quick translation. तुम वहां नहीं थे, try करो। I really appreciate if you get good marks there. Ma'am, I can read Hindi because I'm from Pakistan. My pleasure, Paras, for joining us. Very fast, Tarla, Dharmik, Neeraj, BK, Neha and Dhananjay. Neha, can you give me the answer, please? Yes, ma'am. You were not there. You were not there. Not there. हाँ, तो आपने वो जो एक अलग तरह से वर्ग का इस्तेमाल किया था, उसको Where is not correct. वो शायद जल्दी में कहना चाह रही थी, तो I understand that she was Yes. really enthused to give the answer as quick as possible. So you were not there. You were not there in the party. You were not there in the school. You were not there in the meeting. You were not there. So you can just add on the object also if you are trying to focus on. Okay? आज इतना ही था।
तो हमने आज सिर्फ 2 ही चीजें सीखी हैं जो हमने आपको इनिशियल स्टेजेस में दिखाई थी स्लाइड्स में। पहली बात, वाक्य जो हमारा चला गए वक्त के बारे में बात करता है उसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना आपको पड़ेगा। पहली चीज हो सकता है ट्रांसलेशंस में जब आप करना चाहें हिंदी टू इंग्लिश, तो उसमें देखिएगा कि क्या ये एक्शन वर्ड ऑलरेडी आ रहा है तो मुझे डिड नॉट के साथ इस्तेमाल करना है। पर डिड नॉट कहाँ लगता है? जब मेरा सब्जेक्ट आई होगा, मेरा सब्जेक्ट वी होगा, मेरा सब्जेक्ट ही और शी और दे होगा। लेकिन यू के साथ में हमेशा वर्ब को लगाना, क्योंकि वर्ब जो है वो प्लूरल है और यू में सिर्फ प्लूरल ही चलता है, यू का कुछ और सेक्शन नहीं है। इट के साथ में जो है डिड नॉट नहीं आएगा, इट के साथ में आप वॉस का ही इस्तेमाल करते हैं। सो नेगेटिव में ये छोटी सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिड नॉट फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन नो, third person singular and plural you are using did not, but with second person you, no, it, yes. So you were, and when we are using it, was. So with you and it is was and were, बाकी सबके साथ आपको did not लगाना है। लेकिन जहां भी did not लगाएंगे वहां root form of the verb का होना mandatory है। Let's check the leaderboard. I'm sorry students, I have to really अगर कुछ नहीं समझा पाई हूँ तो माफी चाहती हूँ। आई एम रियली इन अ रश टुडे। आई होप अपनी बात फिर भी आप पूछो, आई विल स्टिल वेट। आई डोंट वांट कि ये सेक्शन छूट जाए आप लोगों का, किसी का भी समझने में कोई भी बात नहीं समझ आई हो प्लीज लेट मी नो, बट आई विल जस्ट गो अहेड विद द लीडर बोर्ड। आई वांट टू सी निशा शाह, यू हैव जस्ट जॉइंड मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी निशा। सिद्धरामेश्वर 372 पॉइंट्स, इलियास with 131 points, Prabhat with 102 points, Akshita with 102 points, and Jatin with 99 points. That's amazing, fantastic, great points coming up there. Jatin, great going there, great Prabhat, Alexa, Siddharameshwar, and Ilyas. Okay, so Tanisha, thank you for giving me that comment there. It really means a lot. आज इतना ही था, पर चलने से पहले Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, I am coming at 1 to 2. So please join me at 1 o'clock. Please be on time. एंड कोशिश करिए ज्यादा, मतलब जहां तक हो सके ना 1:06 या 7 लास्ट है, क्योंकि मुझे भी लॉगिन करने के बाद 2-3 मिनट कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो मुझे भी 5 मिनट 1:05 या 1:06 हो ही जाते हैं। बट उससे लेट मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लास में ही काफी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक इज गिवन देयर। इफ यू ज्वाइन इन द मिडल, राइट नाउ somebody has joined, आप आ तो जाएंगे, जैसे कृष्णा पाठक क्लास में तो आ गए हैं, बट इट्स वेरी लेट, कांट हेल्प इट। सो प्लीज जॉइन मी टुमारो एट 1 o'clock, and Saturdays I'm there at 11 to 12. My pro name that you need to type is VWNA 1010. That's all for today. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Keep joining, keep connecting, keep learning. और मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आपने सैटरडे में, आई थिंक इट वाज फ्राइडे का क्लास था या सैटरडे का था, हमने उसमें बहुत लंबी लिस्ट दी थी आपको। बेस फॉर्म का रूट वर्ड को चेंज करना है विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको ना, जैसे बच्चों की, जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स जो याद करके पेपर देते हैं ना, इनको वैसे ही याद करना पड़ेगा। आप अभी चाहे ऑफिस में पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली को देखते हो, चाहे घर में आप बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू लर्न, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ओके, आई होप दोज हु हैव जॉइन्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द प्रो, आपको शायद कंफर्टेबल लगा होगा साथ में। प्लीज जॉइन मी टुमारो अगेन। ओके, अलाउ मी टू गो। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। The only thing I'm missing that I didn't get to know कि किसको कितने points मिले, except Prabhat Tiger. Prabhat, your points are already mentioned. Baljeet has got 66 points, very good. Yes, Jatin, thank you so much. Oh wow, Nitin Srivastav, thank you so much. Okay, Nitin Srivastav, एक बार और टाइप करके बताओ आप कौन सी मेडिसिन बोल रहे हो, वो ऊपर चली गई थी एक्चुअली। I will just put that. Nitin Srivastav, I'm talking to you. You said, ma'am, I have a dog. That's why I'm telling you. I believe you. Tell me, Nitin. Are you there or you have left? Chalo, I'll call my, okay. I'll call my vet and let's see what he has to say. The season has changed. Chalo.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Manju and Suraj. How are you guys doing? We are doing great, ma'am. Great, great, amazing. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay, Suraj, your voice is coming a little low. Okay, so just see if there's anything wrong with your microphone. All right. Yes, Am I audible, ma'am? yes, Manju, you're audible. You're clearly audible. Okay, thank you, ma'am. Yes, now you're audible, Suraj. Okay, good morning. Sorry, good afternoon, Anupam. So, good afternoon, good afternoon. So guys, as you guys know that this is basically a vocabulary class. So we will be discussing some vocabulary, some words, some meanings, and we'll be forming sentences. And in the meantime, if you guys have any questions or doubts from what we have done till now, especially from grammar and all, you can ask me. I'll try and address your doubts. Okay. So we will start in a couple of minutes. All the pro learners, guys, join quickly so that we can begin. I have one question. Yes, Suraj, बताइए. I read one sentence. It is about to rain. Means बारिश आने वाली है. Right. So I can say it is about to Ram means Ram आने वाला है. Or is it right? No, no, not at all, not at all. You can use it for situations, Okay. not for people. Okay. Okay. It is about to rain. You can say it is about to start. For example, कोई चीज शुरू होने से पहले हम बोलते हैं it is about to start. Next is you can say it is about to get. Hit means Get, not hit. Get dark or sunny or it is cold. Okay, anything, any kind of words like that. You can use it for it is about to get interesting. It is about to get interesting. इस तरीके के आप sentences बना सकते हैं, but you cannot use it is like with proper nouns, especially like Ram, Shyam, person, cow. Okay. this sentence only for situation. Yes, mostly for situations or something. If something is starting, something is ending, these kind of things we can use with this particular sentence. But you will see that all of these are more or less situations, right? Okay. And I have again one question, ma'am. Yes. House and home. What is the difference between? House and home. House is basically the building, Okay. the structure. Okay. And Means home is basically the place where a family resides. So more what to say, it is a little bit more related to the family. Okay, they are more or less used synonymously. So इनको use किया जाता है एक दूसरे के जगह पे. You can say please come to my home. You can also say please come to my house. We'll meet there. But थोड़ा सा difference यही है meaning का कि house थोड़ा structure या building को दर्शाता है. Home is more of the house plus the family. अगर house plus family बोलेंगे तो it will be more like a home. Okay. You must have heard about sentences like he is my home, right? So we sometimes come across sentences like this where a girl is posting the picture of maybe her partner and writing he's my home. What does this mean? This means that the person feels like home, like the person is basically family. Okay, that is what they mean. Or you must have heard about things like home is where the heart is. So wherever your heart is, that is where you create a home. Okay, so you create a home, you build a house. Slight different. Okay. Yes, Suraj, I hope it's clear. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Abhay. Yes, we are doing vocabulary, Abhay. Okay, ma'am. Okay, we haven't started yet. We will start very soon. Okay, ma'am. Okay. Yes, yes, Manju, do you have a question? Yes.
Yes, ma'am. He is my home. He is my home. How we can narrate it is? ये एक्चुअली थोड़ा मेटाफोरिकल टाइप का एक सेंटेंस है. आजकल आप देखेंगे बहुत लोग ये देते हैं, he is my home और found my home, and एक इंसान की पिक्चर दिया हुआ है. What the person means is that इस पर्सन के साथ रहकर मुझे लव फील होता है, मुझे प्रोटेक्टेड फील होता है. सो इसीलिए इस इंसान को मैं होम बोल रही हूँ. सो व्हाट दैट मीन्स एसेंशियली इज दैट दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. दैट्स इट. Okay, Manju. Oh, got it, ma'am. Got it. Yes. It is this type of language we can say poetry. Yes, metaphorical. Metaphorical Okay. और literal, ये जो होता है metaphorical और literal दो वर्ड होते हैं. किसी चीज का literal meaning दूसरा होता है और metaphorical दूसरा. जैसे कि did the cat take your tongue? सोचिए, आपने किसी से कोई किसी से आप बात कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, एंड आपने उनसे पूछा डिड द कैट टेक अवे योर टंग. सो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? लिटरल मीनिंग होता है इसका कि क्या बिल्ली आकर तुम्हारा जीभ लेकर चली गई. बट डू यू मीन दैट? यू डोंट मीन इट लिटरली. व्हाट डू यू मीन इट? मेटाफोरिकल मीनिंग. ओके. Yes, ma'am. मेटाफोरिक या मेटाफोरिकल मीनिंग? मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है कि तुम चुप क्यों हो, व्हाई आर यू क्वाइट. ओके. सो लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग का यही डिफरेंस है. सो व्हेन समवन सेज दैट दिस इज माय होम, दे डोंट मीन इट लिटरली कि ये इंसान मेरा घर है. इट मींस दैट द पर्सन इज लविंग. यस Yes, ma'am. In the sense of अब तुम्हारी आवाज तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? एग्जैक्टली. सो दैट लिटरल मीनिंग तो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि कोशिश करें आप बात क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे. राइट. चुप क्यों हो? Right. Yes. Yes, Suraj, any other question? Did you get your answer? No, ma'am. And I have only one question, ma'am. Yes, bilkul. Enough or sufficient? What is the difference between? Enough or sufficient? Enough, I would say slightly negative connotation है enough में, and sufficient is a little more positive, I would say. Okay. So I'll just write here negative and positive. आपको meaning तो पता है enough और sufficient दोनों का मतलब same ही होता है, but इसमें थोड़ा सा, एक में negative थोड़ा सा है और दूसरे में थोड़ा सा positive आता है. Okay. But synonymously use कर सकते हैं. For example, कोई आपको someone is abusing you. Okay. बहुत सारा like क्या बोले, खराब बातें बोल रहे हैं. Okay, they are telling you bad things, so they are basically abusing you verbally. So you cannot say okay that is sufficient. You will use the negative one. You will say okay, that's enough. Right? काफी हुआ. So you are using this for a slightly negative in a sense, right? Because they are telling you negative things, you are saying it's enough. But if it were positive things and कोई आपको बहुत encourage कर रहा है, बोल रहा है you can do this, you can do that, and so on and so forth, and now you feel very motivated. So we'll say okay, that is sufficient for today. I feel motivated or whatever, right? So यही थोड़ा सा difference है. Otherwise, I think they are quite synonymous. You can use both of them synonymously. Okay, alternatively. Yes, Suraj? Yes, ma'am. Yes. Got it. Okay. Any other questions? Any other doubts? No, ma'am. Chaliye. Very nice. Any other questions from anyone else? Do you guys have any questions, any doubts? You can ask me. Ma'am, I have doubt, but not related of this vocab. Yeah, yeah, I can say मुझे खाना रेडी रखना होता है बच्चों के उनके आने से पहले. So can we say I have to prepare food before come there and before I'm stucking in last word. Yes, I have to prepare food नहीं होगा. I have to prepare food का मतलब हिंदी में होता है मुझे खाना बनाना होता है उनके आने से पहले. But आप बोल रहे हैं तैयार रखना होता है. So it will be I have to keep the food ready for my kids
before they arrive. और Okay. उनके आने से पहले में क्या आएगा मैम? Before they arrive. Before they arrive. Okay, I have to keep. अब मैम prepare and means तो एक ही हुआ ना हिंदी में. अगर वैसे बोले मुझे खाना तैयार रखना होता है, मुझे बनाना होता है उनके आने से पहले, तो बनाएंगे तभी तैयार होगा. नहीं, बनाएंगे तो अलग है, बनाएंगे तो अलग है तनीषा, तैयार रखेंगे तो अलग है. ओके, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे खाना बनाना होता है बच्चों के आने से पहले, तो आप बोलेंगे I have to prepare the food before they arrive. Kids arrive. Or if you are writing I have to prepare the food for the kids before they arrive, कुछ भी, ये जो भी है वो सही है. But if I don't add kid, I have to prepare food before they arrive. Is it correct? उनके आने से पहले मुझे. It is correct if it has context. अगर context है तो correct होगा, right? आप ऐसे ही नहीं बोल सकते. सोचिए आप मुझसे अचानक से बात कर रहे हैं and I say कि when do you cook, Tanisha? You say I prepare food before the kids before they arrive. I will not understand who is they. But if I say, Tanisha, do you cook the food before the kids arrive or after the kids arrive? So you can say I prepared the food before the kids arrive or before they arrive. Then I can understand they means kid. So you have to specify if you are not in a conversation, if the other person is not able to understand. And देखिए, prepare का मतलब होता है कि मुझे बनाना होता है खाना बच्चों के आने से पहले. But I have to keep the food ready का मतलब मुझे खाना तैयार रखना होता है बच्चों के आने से पहले. Okay, there is a difference between this and this. Okay, so, ma'am, I learned two sentences. Keep the food ready and prepare the food ready. The kids arrive. Thank you, ma'am. Very nice. Prepare the food ready की कोई जरूरत नहीं. Prepare the food. Simple. Yes, ma'am. Okay. Very nice. Thank you so much, Tanisha. Any other questions, guys? Any other doubts from anyone else? मैम, किसी ने भी नहीं खेला आज प्लेग्राउंड में. इसका no one are played in playground. नहीं, किसी ने भी नहीं खेला. Past tense. No one played. No one played. In the playground. Yes, उसके बाद बस इतना ही. किसी ने भी नहीं खेला आज प्लेग्राउंड में. टुडे. आज आप बोल रहे हैं, so today तो आपको बोलना पड़ेगा. No one played in the playground today. Okay. Okay, मैम. या फिर आप चाहे तो टुडे को पहले भी लगा सकते हैं. टुडे no one played in the playground. बट उसके बाद फिर कॉमा लग जाएगा. Okay. अगर ये हुआ किसी ने भी आज नहीं खेला, नहीं, ठीक है मैम. ओके मैम, थैंक यू. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. टुडे कॉमा no one played in the playground. Okay, दोनों ही कर सकते हैं आप. Both of them are correct and they mean the same thing. Then today में can we say nobody has played today? Nobody has played today in the playground. You can say. अगर today आज खत्म नहीं हुआ है, then it is better actually to use perfect tense, present perfect. So nobody has played is also absolutely correct. Okay. Yes. Any other questions? Any other doubts, guys? बताइए. चलिए, no questions, no more doubts. Let's quickly jump to our vocabulary and let's read a paragraph and let's look at some new words. Tarla, you can also join the Zoom meeting if you haven't already. All the pro learners, guys, you can join, right? Chaliye, I hope my screen is visible, guys. Yes, ma'am. We can. Chaliye, we will start with this today. This is the second one, the dragon. So, anyone who wants to read? I want to read, ma'am. Okay, Suraj wants to read. Okay, Suraj wants to read, then Anupam. Suraj, just speak a little louder, okay? Okay, ma'am. All right, chaliye, let's start. The dragon. An evil dragon lived in a castle in the remote southern mountains. One day, the monster landed in a town. The dragon commanded the people, "Give me food now, or I will eat it." We don't listen his voice. You can't hear his voice. Okay, Manju, let him just read the first paragraph. I'll read again. You will hear that. Okay. Yes, Suraj, please continue. I can hear you. Okay.
give Yes, Suraj, I think you are muted. Please continue. Suraj, are you there? Ma'am, think- can't answer anything. Yes, I think he's facing some network issues. Okay. Who wants to read then? Anupam, right? Yes, ma'am. Can Yes, I read, one. ma'am? Yes, No, Abhay, no, one no, second. no. After Anupam. Okay, Abhay. Okay. Yes, Anupam, you can read. Anupam, would you like? Okay, then Abhay, you can. Yes, ma'am. Yes. An evil dragon lived in a castle in the remote southern mountains. One day, the monster landed in a town. The dragon commanded the people, "Give me food now, or I will eat you." The dragon lifted its wings so that its lungs could be completely filled with hot steam and breathed it uh, upon the People. people. A man turned into a stone statue. Very good. Okay, That thank you so much, Abhay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Okay, very nice. So, evil is basically kharab, right? A person who is really bad or a thing that is really bad Yes, is yes. called evil. जिसको बोलते हैं शैतानी basically. This is an Yes, ma'am. adjective. Satan. Okay, adjective है Yes. ये. Evil यहाँ पे adjective का काम कर रहा है. Dragon is basically a mythical beast. Mythical beast जो कि सच में नहीं होता है. It is kind of like a reptilian lizard, huge lizard that throws fire from its mouth, right? And ये जो word है इसको castle बोलते हैं. Castle. ये जो T है इसका pronunciation नहीं होता है. It is castle. Okay, T लिखते हैं but उसको pronounce नहीं करते. It is a silent letter. So the pronunciation is castle. And castle is basically जो हम बोलते हैं ना, we have heard about castles like huge buildings जिसमें prince, princess, king, queens रहते थे, उसको castle बोला जाता है. Okay. like Yes, palace. like a palace. Yes, correct. Absolutely correct. Haveli, हाँ बोल सकते हैं, kind of like a haveli. Okay, but castles are, I would say, bigger than just a haveli. Okay, it is a little bigger. So, for example, the places where kings and queens used to reside, those used to be called as castles. Mahal. Okay. Mahal, right? Exactly, Mahal. Okay, remote southern mountains. Remote का मतलब है सुनसान. A place that is devoid of many people or many animals or any human beings mostly. Okay, so जहाँ पर civilization कम है उसको हम remote area बोलते हैं. For example, I can say there are certain remote areas in villages. कुछ खाली खाली areas होते हैं, आप देखेंगे villages के side में जो बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई इंसान नहीं रहता वहां पे, उसको हम remote area बोलेंगे. So remote southern mountains, southern means something to do with south. So south नीचे की तरफ होता है, so that area will be called as southern. And so near the southern mountain there was a castle. One day the monster landed in a town. Monster जो word है ये noun है. Okay, this is a noun. And monster का मतलब होता है basically what to say, जानवर, एक भयानक जानवर जो होता है उसको हम मॉन्स्टर बोलते हैं. राक्षस. Right, Rakshas. Okay, so not just always used in the sense of noun, it can also be used in the sense of adjective. I can say not just adjective, like subject complement भी हो सकता है. I can say that you are a monster. Okay, if I say you are a monster, what I want to say is कि आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं. Okay, so monster can also be used in that sense. Landed in a town. Land करना मतलब जैसे aeroplane land करता है. If something is flying and it comes down to the ground, we call it landing. Okay, L-A-N-D, landed, landing. Verb है basically. Excuse me, ma'am. Yes, Kumar. Ma'am, I think monster is referring to the evil dragon. Yes, of course. Monster is referring to the evil dragon.
डेफिनेटली. सो यहाँ पर नाउन है, बट आप जब चाहे तो आप उसको दूसरे नाउन की तरह यूज करेंगे, बट दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स को भी आप मॉन्स्टर बोल सकते हैं. इफ द पर्सन इज रियली रियली बैड एंड यू आर completely convinced that this person is devoid of any feelings, any sentiments, then you can call them a monster. Okay, because they don't show human characteristics. All right, Kumar. Okay, ma'am. Yes, the dragon commanded the people, give me food now or I will eat you. So the commanded, command karna, order karna. So the dragon ordered the people. Again, commanded is a verb. Command, commanded, commanded, commanding. Right? And it is basically ordering. It basically means to order someone to do something. Ordered the people to give me food or I will eat you. So the dragon is saying either you give me food or I will eat you. The dragon lifted its wings. Lift हमने कल ही किया था, not कल. In the previous class we have done lift. Lifting means taking something off the ground. कोई चीज ग्राउंड से उठाना. So उसने अपने wings को ग्राउंड से उठाया. Wings मतलब जो पर होते हैं बेसिकली. पंख, पंख होते हैं, जैसे कि पंछी के पंख या पर जो बोलते हैं वो. Similarly, dragons also have wings and he lifted them off the ground. मतलब उसने ग्राउंड से उसको उठाया. All right. So for example, let's say you are lifting your feet off the ground. So you can also use these kind of words for lifting anything from the ground, even your body parts. I lifted one of my foot off the ground. मैंने एक पैर ग्राउंड से उठाया, जमीन से उठाया. Okay, similarly, the dragon lifted its wings so that its lungs could be completely filled with hot steam. So lungs भी हमने कल ही last class में ही किया था. Lungs are basically the organs जिससे हम सांस लेते हैं, right? The organs that help us in breathing. So it is believed that dragons can breathe fire. Okay, ये माना जाता है कि dragons अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं. So that is why they are taking hot steam inside their lungs so that it can come out as fire. Steam क्या होता है? पानी अगर आप उबालेंगे तो जो भाप निकलता है उसको हम steam बोलते हैं. All right. So for example, after boiling water for 5 minutes, the steam started rising. Means उस पानी से भाप निकलने लगा. Okay, and of course the steam that we get is obviously very hot all the time. Actually, I don't know, I have read this very long time ago when I was really young. I think steam is supposed to be hotter than boiling water. 100 degrees से ज़्यादा उठता है, but water का शायद highest 100 degrees ही है, right? Because after that it changes to steam, something like that. I have forgotten the concept. Yes, Kumar, do you have a question? No. Yes, someone was saying something. Does anyone have anything to say? Ma'am, yes, I have a question. बिल्कुल. Ma'am, here the dragon commanded the people, and it is in quotation. Give me food now, I will eat you. So it is in quotation, so we'll have to use it as it is. But in narration, can we say like, ma'am, the dragon asked food to eat, or they will kill, हाँ बोल they सकते will हैं. kill them. No, they will नहीं होगा, ये होगा. Okay, very good. Okay, Or 1 second, Kumar. he will kill them. He will kill them. नहीं, फिर भी नहीं होगा. I will come to that. 1 second. Okay, Kumar, I'm just coming to that. Someone or the other will answer. Breathe थोड़ा सा देख लेते हैं. Breathe क्या होता है? Breathe is basically सांस लेना. Okay, breathing in and out. And it is also a verb. But इसका जो noun form होता है, वो होता है breath. Breath. B-R-E-A-T-H. Breath. Okay. So breathe. B-R-E-A-T-H-E. Breathe is the verb form, breath is the noun form. So I'm taking some breaths, but I'm breathing. Okay, difference. So and breathed it upon the people. So it it kind of like spewed fire from its mouth. Spew karna matlab फेंकना, छोड़ना. Okay, kind of like that. So it spewed fire from its mouth. A man turned into a stone statue. Okay, so this dragon is a little different. It does not spew fire. It because of its the air that it is releasing, because of that people are turning into stone statue. Statue मतलब देखते हैं हम statues म्यूजियम वगैरह में होते हैं. मूर्ति मैम. And we have the मूर्ति, right? Yes, absolutely correct. मूर्ति. So stone के statue में convert हो रहा है. Stone से बना हुआ मूर्ति, पत्थर से बना हुआ मूर्ति. Okay. This is the meaning of the first sentence. Okay. Who wants to tell me the indirect speech of the dragon commanded the people, give me food now or I will eat you?
बताइए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? द ड्रैगन कमांडेड द पीपल गिव मी फूड नाउ और आई विल ईट यू. Yes, anyone? Suraj? Ma'am, dragon said by people, give me food now or I will eat you. No, actually, we have not done this yet. Some people have done this with me. We will do this later. It's a very advanced topic. But when we are changing, it changes completely. Okay, so it will be something like the dragon asked the people to give him food, or he said that he would eat all of them or eat them. Okay, so if you look at the sentence, who was asking? Kumar, it will be something like this. The dragon asked the people to give him food. Now का बन जाएगा then, or else he said that he would. Will का बन जाता है would. He would. Ma'am, can we say one more word? Them. Yes, बताइए. हाँ, हो सकता है, बहुत सारे ways हो सकते हैं, बताइए. The dragon asked the people for food. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. You can also say the dragon asked he would eat them. Or else he would eat them. हाँ, बोल सकते हैं. But because यहाँ पे already एक verb give दिया हुआ है, so it is better to incorporate that in your indirect speech as well. Okay, Kumar. Otherwise, Okay, yes, ma'am. you can also say that the dragon asked for food, or else he said that he would eat them. Okay. Yeah, ma'am. Ma'am, I find very challenging when it comes to narration. Why? Narration is not that difficult. किस चीज को change करना है? अगर आप No, ये ma'am, समझ actually, जाएंगे. Yes. I have improved little bit, but ma'am, Diksha ma'am always point out that we, shift into direct speech instead of indirect speech. She always Right. offer us to share something indirect speech, and we always share in direct speech any story. Right. But I have Right. improved little bit, but there are many people. I mean, yeah. So I Yes. have been trying to improve that, ma'am. Right. Try, Kumar, practice a lot, and like once you understand direct and indirect speech की just दो ही चीज आपको समझनी है. There are just two things to direct and indirect speech. One is what is changing. The problem is, ma'am, I have learned it completely. I had learned it completely, but I didn't use it in daily life. So I forgot all Right. the rules and everything. Right. But थोड़ा I थोड़ा have learned practice it कीजिए. Just practice a little on bit. in group platform, ma'am. Okay, I understand. It is quite an advanced topic. Don't worry, we don't really use it that much either. Right. Chaliye, let's continue. So after Abhay, who wants to read? Ma'am, it is important for me because I love writing a story. Oh, Like, you're writing stories. Then you definitely have to work on that. Definitely. screenwriter, Kumar. basically, you can say, yeah. Okay. Then you have to definitely work on that, Kumar, a Yeah. lot. So that is the reason I always try, but I will Try. use in my daily If you life. ever have any problems, you ask me, okay? Sure, ma'am. Okay, chaliye. So Tarla, Tanisha, Alpana, one after the other. Yes, Tarla, let's start. The people submitted and brought food. The dragon ate all of it and left. The people sent a boy to ask for help from a wise old man. He resided in a temple. The boy told the old man about the dragon. Then the old man Counseled the boy. counseled the boy. A meteor. Sorry. A meteor. Sorry. Yes, correct. A meteor will fall. It will fall in the northern sky. Northern sky. It will make a huge explosion. Find the meteor. Meteor.
and bring it to me. I will use it to make a sword for you. Okay, very nice. Tarla, thank you so much. Very nicely read. कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा तरला, एज आई एम एक्सप्लेनिंग अच्छे से देख लीजिए. ओके, अच्छा. द पीपल सबमिटेड एंड ब्रॉट फूड. सबमिटेड मतलब सबमिट करना, किसी के सामने सबमिट करना, किसी के सामने झुकना, राइट. सो आई सबमिट इन फ्रंट ऑफ यू मतलब मैं तुम्हारे सामने झुक रही हूँ. ओके, सबमिट इज अगेन अ वर्ब. इसके अलावा सबमिट का और एक मतलब होता है कोई चीज जमा करना. जैसे कि आई सबमिटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क जमा कर दिया टीचर के पास. Okay, उनको दे दिया basically. So both are meanings of submit. Both are verbs basically used as submit, submitted, submitted, submitting. Okay, so the people submitted in front of the dragon. मतलब वो लोग झुक गए dragon के सामने, and they brought food for him. Brought मतलब लाना. Basically, bring, brought, brought, bringing. These are the forms. Okay, bring, brought, bringing. और एक होता है bought. आर के बिना, बिना आर के एक होता है बॉट, BOUGHT. वो होता है बाय का पास्ट टेंस. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. बाय, बॉट, बॉट, बाइंग. ओके, सो बाय का मतलब खरीदना, उससे आता है बॉट, दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ खरीदना. एंड ब्रिंग का मतलब होता है लाना. बिना खरीदे भी आप ला सकते हैं, घर से कोई चीज ला सकते हैं, राइट. सो ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, मतलब लाना. Okay, so so after submitting, the people started bringing food for the dragon. The dragon ate all of it and left. So dragon सारा खाना खा गया और वो चला गया. He was pretty happy, right? The people sent a boy to ask the help. Sorry, the people sent the boy to ask for help from a wise man. एक बहुत ही wise man से वो लोग जाके हेल्प मांगने लगे. सो वाइज बेसिकली मीन्स समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट. सो वाइज एंड ओल्ड, दो एडजेक्टिव्स है एक ह्यूमन बीइंग के लिए. देयर आर टू एडजेक्टिव्स फॉर दिस वन ओल्ड मैन. ओके, ही रिसाइडेड इन अ टेंपल. रिसाइडेड वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, राइट. रिसाइडेड का मतलब होता है बेसिकली यस टू स्टे एट वन प्लेस, राइट. रेसिडेंस, रेसिडेंट भी आता है इससे. So कोई अगर कहीं पर रह रहा है तो we can say that he is residing there. Again a verb. And in a temple, temple basically मंदिर, right? Temple का मतलब मंदिर होता है, and it is again a noun. So the boy told the old man about the dragon. So वो जो लड़का था उसने old man को dragon के बारे में बताया. Then the old man counseled the boy. Counseling someone. Counseling means giving them advice, telling them about something that they don't know about, right? So we go to counselors for counseling. आपने देखा होगा कि बहुत जन करियर काउंसलिंग करवाते हैं. करियर काउंसलिंग मतलब करियर के बारे में वो कंफ्यूज्ड है, मे बी उन्हें नहीं पता कि क्या करना है. सो वो क्या करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो उन्हें बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं बेसिकली. सो काउंसलर इज अ पर्सन who helps you to understand the right path, right choices, right advice. Okay, so counsel करना मतलब वही होता है basically a counselor telling you what to do. So the old man also counseled the little boy, and what did the old man say? A meteor will fall in the northern sky. Meteor, meteor का मतलब meteor, meteor, ये हमारा pronunciation है. जैसे meaty, meteor. Okay, simple pronunciation है. Meteor का मतलब क्या होता है? Meteor is basically जो उल्का की बारिश होती है हम देखते हैं, राइट. द फॉलिंग स्टार्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, दैट इज एक्चुअली लाइक अ पीस ऑफ रॉक दैट इज एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और वो घुसते घुसते वो जलने लगता है, राइट, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन. एस्टेरॉइड समथिंग. Yes, asteroids, meteoroids दोनों होते हैं. So meteors are basically coming from meteoroids. But yeah, आप लोग in Hindi उल्का पिंड, बिल्कुल बिल्कुल उल्का पिंड, right? Absolutely. So as it enters, it starts burning, and it looks like a burning. What to say? It looks like a falling star. कि एक स्टार तारा टूट कर गिर रहा है. But it's not a star, of course. It is simply a meteor or an asteroid, whatever. So meteor. So वो गिरेगा आसमान से in the northern sky. So ये northern का थोड़ा pronunciation different होता है. northern नहीं बोलते हैं, okay? जैसे southern होता है, southern नहीं बोलते हैं, वैसे ही northern होता है, northern नहीं होता है. Okay? ना done. This is the pronunciation. ना simple ना बोलना है, जैसे हिंदी का ना होता है, ना done. Simple done. Okay? जैसे done, the ना वैसे. So the pronunciation is northern.
Okay, northern, हल्का सा एक R का sound आता है. So northern sky means the sky that is on the north hand side, right? So ऊपर वाला, like from where we see the northern star. Northern sky में हमें northern star भी मिलता है, which never moves around. It is always in one place, right? It will make a huge explosion. So huge means बहुत बड़ा. Explosion means dhamaka, right? So a huge explosion was caused due to the bomb or due to the bombings. Okay, so explosion means dhamaka, जिसमें थोड़ा आग वगैरह भी होता है, and huge is basically बड़ा. Find the meteor and bring it. Again, the wise man is saying, please find the meteor and bring it to me. Bring मतलब मेरे पास लाओ. Bring का ही past tense हमारा brought है. Bring का ही past tense brought है, right? Bring, brought, brought, bringing. So I will use it to make a sword. Pronunciation sword. Okay, sword मतलब तलवार. Sword for you. So वो एक तलवार बनाकर देगा. I hope यहाँ तक clear है guys. Any questions, any doubts? Okay, चलिए. So we will move on to the next part. So who wants to read after this? Yes, ma'am. Yes, Tanisha. Yes, Tanisha, Yeah. you can start. The boy didn't as the old man said. Soon the sword was ready. Use this to kill the dragon, but be careful. You must cover yourself with weeds. That small bed. That smell bad. That smell bad. That will ensure that he does not smell you, the man said. Okay, thank you. Very nice, Tanisha. Absolutely correct, right? So the think. boy did as the old man said. So the boy did as the old man had said. He did exactly that. Soon the sword was ready. So the old man took the meteor and he made the sword, and he gave the sword to the little boy, and he said, use this to kill the dragon. इसको use करके dragon को आप मार डालिए. But be careful. सतर्क रहिए. Careful means सतर्क. Okay. Be careful. You must cover yourself with weed. Cover means ढक लेना. किसी चीज को ढक लेना. Like cover your car. कार को ढक लो. So you must cover yourself. खुद को cover करो. You must cover yourself. You and yourself. What kind of pronoun, guys? You must cover yourself. Reflexive pronoun, ma'am. Reflexive pronoun. Very good. Very good. Reflexive pronoun. Subject and object are the same person. You and yourself. आप खुद ही को cover कर रहे हो. कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो. किसको कर रहे हो? खुद ही को कर रहे हो. So reflexive pronouns. Very good. With weeds. Weeds actually are like those small plants होते हैं ना, जिनको हम उठाकर फेंक देते हैं. So if you plant like जी मंजू खरपतवार. Okay, I don't know the Hindi. Definitely, I did not even hear about this, but maybe okay. And basic क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज plant करेंगे, if you plant vegetables or fruits or flowers, whatever, you will see small plants grow around them that are unnecessary, and they take the protein, like protein बोल रही हूँ. They take all the nutrients, they suck up all the nutrients, and then your plants cannot grow. So what you do is you take those weeds away, right? उनको आप pluck कर देते हैं. So that is what weeds are. And this old man told that like smother yourself in that weed and it should smell bad. गंदी बदबू होनी चाहिए उसकी. Smell bad so that the dragon cannot smell you. ताकि वो dragon आपको smell ना कर सके. That will ensure. Ensure मतलब it will make sure. Ensure is basically making sure. Okay. That will make sure. Ensure का simple definition है make sure. So that will make sure that he does not smell you. इसका मतलब है ensure. Okay, let's go to the next part. I think Alpna wanted to read, right, Alpna? Yes, ma'am. Padhiye, Alpna. The boy traveled for many days. The boy traveled for many days to find the castle. He went to the upper level and opened a door. He could see the dragon's tail. It was sleeping, so the boy killed it. Then he took the dragon's gold and jewelry and returned to his town. The people were happy. Very nice. So the boy traveled. Travel करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह सफर करके जाना, right? So the boy traveled. Traveled is again a verb. Travel, 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 traveling. For many days to find the castle. और finally उसे castle मिल गया. He went to the upper level. Upper.
लोअर हमने किया हुआ है, बॉटम हमने किया हुआ है, मिडिल हमने किया हुआ है. रिमेंबर वी हैव डन दीज वर्ड्स. सो अपर मीन्स ऊपर के लेवल में गया. लेवल हियर बेसिकली मीन्स लाइक द फ्लोर्स, बिकॉज castles don't really have floors, so they have kind of levels like the bottom level, middle level and upper level. So वो upper level में गया and he opened the door. He could see the dragon's tail. उसे dragon का पूंछ दिखा. Tail means पूंछ, like a cat's tail, dog's tail, so on. So a dragon's tail. It was sleeping. वो सो रहा था. So the boy killed it, and the boy was able to kill the dragon. Then he took the dragon's gold and jewelry. See, dragons, ये क्या है? Apostrophe is possessive है, right? So we are making the noun dragon into possessive. Dragon's gold and jewelry. उसका gold और jewelry. Jewelry basically means all the ornaments, right? And returned, वापस आ गया to his town. The people were very happy. Okay. So I hope the words and all are clear. Any questions, any doubts, guys? From words, meanings? Yes, ma'am. I have a doubt, ma'am. I want to know, ma'am, again, castle, meaning of castle. किला. Castle, castle नहीं, castle. किला मैम. Okay, किला. ma'am. Okay, किला, like a royal palace. Okay, महल. Okay, castle नहीं होगा, castle होगा. T silent है. Okay. Okay, ma'am. Thank you, everyone. Most welcome. Yes, Kumar, do you have a question? Yes, ma'am. Like बताइए. how dragon was wearing gold and jewelry, ma'am. Whom were- See, there is this myth, very very common myth. इसको actually like this goes back to Middle Ages का myth है, okay? So ये माना जाता था कि dragons जो होते थे वो क्या करते थे? One, they used to spew fire, spew, S-P-E-W, spew fire from their mouth, and what they used to do is they used to collect all the gold and jewelry and they used to take it back to their castle. एक castle होता था जहां पर वो ले जाकर उसको रख देते थे. All right, and mostly this myth was also related to this idea कि वो dragon कभी ना कभी कोई prince हुआ करता था. And what happened is उसको curse दिया गया, and after that he became a dragon. And because of that, although he was a dragon, he would still get the jewels and the gold and everything, and he would take it to his castle and put it in a like a treasure box. Okay, chest में जाके वो रख देता था. So usually knights would go kill the dragon and get all that gold and jewelry back. So ये थोड़ा सा myth है, like myth मतलब कहानी है basically, which is not Story. true. Yes. Not really story, like myths होते हैं ना, हर एक जगह के अपने अपने myths होते हैं. जैसे कि इंडिया में कोई myth, anyone knows any Indian myths? There are so many myths in India, right? पूरा का ही पूरा mythology पे ही created है. So basically like जो stories बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत like centuries से चलती आ रही है, उनको हम myth बोलते हैं. Okay? कहावत मैम, कहावत है. Not कहावतें, ऐसी कहानियां जिसको I don't know the Hindi of this. Like मैम Okay. जैसे जैसे कहते हैं बंगला. हेलो. Yes, बताइए अपना. मैम जैसे बंगला साहब, शायद everyone knows that बंगला साहब गुरुद्वारा, तो वहाँ कहते हैं कि अगर किसी को स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ अगर वो नहा ले 5 times, then he will Right. recover. Right. So it is kind of a myth, right? सालों सालों से मान्यता ये मैम, मान्यता like. मान्यता kind of like thing, right? But it is definitely a story that has been going on for a long time, जिसे बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं. Okay. And it is also related to Ma'am, I was mythology. confused. Yes, Kumar? And I was confused, like, who gave him jewelry? Jewels. And No, there is this myth that they No used to one. get the jewelry. He They used captured to ma'am. steal, capture, yes, the jewelry. They used to get those jewelry after killing the people. Chaliye, And we will not discuss the. there is doubt, ma'am. Yes, Kumar? Ma'am, is it fiction, ma'am? Was it fiction or course. truth? Of course, it is fiction. Of course. Definitely. Okay, ma'am. Myths, all myths are considered to be fiction, but myth में थोड़ा सा difference होता है fiction से. Fiction जैसे कि अगर मैंने आज एक बैठ के story लिख दिया तो वो fiction बन गया. But myth एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से चलती आ रही है. You cannot really change it. You can adapt it into stories, but you cannot really change it.
Okay, जैसे कि आई एम नॉट गेटिंग एनी इंडियन मिथ्स, कुछ भी याद नहीं आ रहा है. Got it, ma'am. Yeah, Okay, myth is like सदियों से चलते आ रहे हैं. सदियों से एक कहानी जो सुनते There आ is a रहे हैं. myth called, you know, शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था. Right, उसको is that a myth? I ताजमहल don't know. बनवाने वाले को. I don't know if रावण के 10 सर हैं होते थे. Right. These are kind of myths, right? These are kind of myths, definitely. So all of these stories in mythology, more or less, they are myths. क्योंकि मतलब ये तो possible नहीं है, right? You guys can understand. So चलिए, let's come to our questions. चलिए, let's see. Council, explosion, meteor, bring. Okay, very nice. All right, chaliye. Let's see which two words are related. Who wants to try? Tarla, would you like to try? Yeah, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Tarla. Okay, Abhay, I'm coming to you. 1 second. Okay, let's go by the list. चलिए, तरला बताइए कौन से दो शब्द आपको लगता है कि कनेक्टेड है? Council. Council and Meteor. Meteor तो हमारा उल्का है बेसिकली, राइट? उल्का पिंड. तो काउंसिल करने के साथ यस तनीषा. Explosion and meteor. Explosions and Explosion and meteor. Correct. Explosion and meteor. Why? Because meteor गिरेगा तब जाकर explosion होता है, right? Meteor गिरता है तब जाकर explosion होता है. Very good. Okay, I want who was answering? Tanisha. Yes, ma'am. Alpna. Okay, Alpna and Tanisha. Okay, one by one. Both. Okay, one by one. चलिए, Tanisha make a sentence with both explosion and meteor. एक ही sentence दोनों words होने चाहिए. Difficult, ma'am. Very difficult. सोचिए, सोच के बताइए तनीषा. Not very difficult. You can do it. Okay, Alpna, you think Tanisha, I'm coming back to you. Alpna बताइए. Northern, remote, meteor, southern. इसमें common कौन से words है? Ma'am, northern and southern. Northern and southern. Can you make a sentence with both northern and southern in them? एक ही sentence दोनों words होंगे. Ma'am, remote. I have a sentence, but it is very funny. Okay, बताइए, Like- no problem. Like I am from northern and someone is from southern. Southern area, southern part. Southern and northern are adjectives. Okay, ये adjectives है. तो इनको आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते I'm from southern and I'm from northern. You will have Ma'am, to may say I try, things, ma'am? right? Yes, Kumar, please try. Ma'am, Kashmir is northern part of India and Tamil Nadu is southern part of India. Okay, you can also use most in this sentence because Kashmir is the northernmost part of India and Tamil Nadu is the southernmost part of India. Right? Ma'am, Absolutely why correct. most, ma'am? Because एकदम एक्सट्रीम है ना, उसके बाद तो और नॉर्थ नहीं है इंडिया का, और ये तमिलनाडु के बाद भी और कोई साउथ नहीं है इंडिया का. So that is right. Northern most part of India is Kashmir. Southern most part of India is Tamil Nadu. Okay, Kumar. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And you can also say, I don't prefer northern cuisine. I would rather have some southern cuisine. Right? ये cuisine वगैरह के साथ भी आप use कर सकते हैं. So ये adjectives है, इनको सिर्फ use नहीं किया जा सकता, किसी चीज के साथ use करना हो, किसी noun के साथ, जैसे कुमार ने किया. Okay? Very nice. Okay, next बताइए Tanisha, have you come up with a sentence? Ma'am, I don't know is it correct or not. When meteors fell down from the sky, so it's definitely obviously explosion. It become explosion होएगा ही, ma'am. No, it creates explosion. Explosion verb है. Okay. Create explosion. Explosion verb नहीं, noun है, sorry. Explosion noun है. Okay, meteor भी noun है. So you can say that some meteors that fall on earth create explosions. Some meteors that fall on earth create explosions, right? कुछ ऐसे meteors होते हैं जो earth में गिरने के बाद explosion create करते हैं. Most of the meteors, they actually, when they are entering, they are burnt by within that process and they don't reach even the earth's surface.
And Okay, sometimes but it fell down, I think, in the sea. And yes, most of the times they do hit C and they create a certain explosion. Good. Okay, good try, Tanisha. All right, next, after Tanisha, then we have Manju. Manju, would you like to try the next one? Yes, ma'am. बताइए मंजू, लैंड, स्टीम, कैसल, टेम्पल कौन से कनेक्टेड है? C and D. Ma'am, C and D. कैसल एंड टेम्पल, वेरी गुड, बिकॉज दे आर बोथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? कैसल एक महल है, पैलेस है, एंड टेम्पल मंदिर है. बताइए, मेक अ सेंटेंस मंजू, लेट्स सी. An old era, there were lots of castles. Okay, and temple? We go to temple to pray the goddess. To pray to goddess. To pray to goddess. Okay, all right, very good, Manju. 2 sentences, but correct. Absolutely may I correct. try in unique way, ma'am? Yes, yes, Kumar, definitely. बताइए. Ma'am, in Mughal era, there used to be a castle and temple also was there in the castle. Okay, right. That is true. In Akbar's castle, there was a temple indeed, built especially for Jodha Begum, right? Ma'am, can we say temple has made as a castle? The temple has been made as a castle, made into a castle बोलेंगे then. Temple को castle में बदल दिया गया या बनाया गया. Then we will say, बना हुआ है, ma'am. How can we say? Oh, the temple looks like a castle. The temple looks like a castle, or it has been built as the built. No, let's say it looks like a castle. That is the best. Okay, Tanisha. Yes, ma'am. All right. Okay. Thank you so much, ma'am. Yes, Alpana. Ma'am, may I? Okay, Alpana, 1 second. I'll give a chance. Okay, 1 second. Yes. Okay. Kumar, would you like to try the next one? बताइए. Ma'am, the next one, northern wing, upper, sure. No, I'm not sure, ma'am. Confused. I think wing and upper थोड़ा सा confusing है, मुझे भी लगता है. I think wing and upper can be considered क्योंकि wings can take you up, right? Okay, ma'am. Northern भी तो ऊपर होता है, upper, northern. नदन तो लाइक लैंड में ऊपर होता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम आसमान की तरफ जा रहे हैं, हम लैंड में ही नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं, राइट? Yeah, okay. बट विथ विंग्स वी कैन फ्लाई अप. How will we use in this sentence? By flapping its wings, the bird flew up to the sky and kept going upper. No. Upper नहीं होगा, like इसके साथ नहीं होगा. You will say something like Ma'am, dragon use their wings to go upper. No, not upper. Then you will say up. Okay, upper नहीं होगा. Up. Upper is an adjective. Okay, so you can say things like, for example, the bird flapped its wings and flew to the upper level of the house. Okay, this you can say. Yes, ma'am. Can we say, ma'am? Yes. With the help of wing, the bird reached upper level of the house. Yes, absolutely. Bilkul. Okay, something like that. Very good, Kumar. Thank you so much, Kumar. Okay, after Kumar, Anupam, would you like to try? Statue, command, weed, submit. Statue, command, weed, submit. ये बहुत easy है, opposites है. Command and submit. Command and submit. Very good, Anupam. Make a sentence. बहुत अच्छा sentence बनेगा इससे. Command करेगा कोई, submit करेगा कोई. Ma'am, can you help me? Think about like if someone is commanding something and the other person is submitting in front of them. Okay. Ma'am, can I? करला. Okay, try कीजिए, करला. Traffic commanded his Yes, the traffic police commanded. for Yes, Kumar, would you like to try? Ma'am, बताइए. I would like to try. Yes, ma'am.
Ma'am, I also. The judge commanded to Vakil to submit all the documents related to crime within 24 hours. Very that good submit- sentence. Okay. That is a different submit, but Yes, that is a ma'am, very that good is a- sentence. Correct. Very nice. Okay, Ma'am, Tanisha, sorry, बताइए. I can't see this. Yes, no problem. Very good sentence. Very good sentence. Yes, Tanisha, बताइए. Yes, ma'am. When doctor commanded us to do this, so we should be submitted. No. We should be submitted नहीं हो सकता है. Submit is a verb. We should So we should. Again, अगर आप बोलेंगे submit, then again it does not make the same sense. Okay. And the sentence is not making a complete sense. You can say something like, for example, when the general commanded, the enemy submitted. Okay, when the general commanded, or when the general commanded his troops to march in, the enemy submitted. जब general ने command किया कि troops को जाने के लिए, हमला करने के लिए, so enemy ने submit कर दिया. They said no, we don't want to fight. Okay, understood. Yes, Tarla. Ma'am, Ukraine doesn't want to submit, ma'am. Ukraine doesn't want to submit. That is a good sentence. Absolutely correct. They are fighting till their last breath. Yes, Tarla. I break the signals rules. Then traffic police commanded for my license, and I submit it. It absolutely correct. Absolutely correct. But commanded नहीं होगा. उसमें आप बोल सकते हैं कि the traffic police asked for my license. Okay, simply मांगा because traffic police cannot command you, right? So good. But Very ma'am, nice. here, Tarla. this submitted means accept something like. Yes, exactly. किसी चीज को जमा करना basically. Okay. Ma'am, Yes, Anupam. why I'm not making sentence? I think what should I do? बताइए. मतलब मैं सेंटेंस क्यों नहीं बना पा रही हूँ? मतलब क्या करना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा? No, don't worry, Anupam. हर एक वक्त तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आप मतलब करना ही है. Make a sentence separately with command and submit. I'm sure you will be able to make separate दो sentence बनाइए. Ma'am, this is difficult because we have to make one sentence. And Right, exactly. That is why it is difficult. अलग-अलग से बनाइए. अनुपम बताइए. Command से एक sentence बनाइए और submit से एक sentence बनाइए. I am submitting question paper. Very good. I am submitting the question paper. Absolutely correct. Command से बनाइए. I am बताइए. आपकी मम्मी ने मे बी आपको कमांड किया है कोई चीज करने के लिए या नहीं करने के लिए. So आप कैसे बोलेंगे? My mother has commanded me not to leave the room. My mother has commanded me to study for 8 hours. Right? इस तरीके से आप कर सकते हैं. Okay. बुक अनुपम बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो बुक डाउनलोड कीजिए. बुक का नाम है 4000 Essential English Words Part 1. 4000 Essential English Words Part 1. बुक आप करना स्टार्ट कीजिए. ये Part 2 है. Okay. Part 1 आप शुरू कीजिए. बहुत सिंपल है. Alright. Ma'am, my sentence is. And I make sentence, ma'am. Yes, Abhay, 1 second. I'm coming to you. Ma'am, I want to make one sentence. My boss commanded me to submit all paper on time. Submit the paper on time. Absolutely correct, Tanisha. Second में तो third वो past में नहीं आएगा ना. First में मैंने लगा दिया. My boss commanded me to submit all the paper. No, second में नहीं है इसीलिए नहीं है. It is because it is infinitive. To submit infinitive form में इसीलिए उसमें submitted नहीं आएगा. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. To के बाद हमेशा infinitive first form में आता है. Root form. Yes, root form में आता है. Very good. Okay. अभय बताइए next one. The bird hurt its body part that helps it fly. ये सब है कौन सा word होगा? जिस body part को use करके birds fly. Wings. Very good. Wings. Can you make a sentence with wings? अभय. Bird fly with wings, ma'am. Okay. The bird flew away बोल सकते हैं. Using its wings. Very good. Very good, Abhay. Absolutely correct. Thank you so much, Abhay. Okay. Okay, ये ma'am. flew का spelling गलत है. Okay, I'll just correct it. Next, बताइए. अल्पना बताइए.
There are many stone images in the museum. क्या बोलेंगे उसको? Stone images. पत्थर की मूर्तियों को क्या बोलेंगे? स्टैचू मैम. Statues. Very good. Statues. Make a sentence, Alpna. अल्पना एक सेंटेंस बनाइए. ये स्कल्पचर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल. Can you make a sentence with statues? Okay, Tanisha बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. 1 second, Tanisha. Yes, Alpna. There are many statues. Many statue in the museum. In the museum. Okay, absolutely correct. Yes, Tanisha, you were saying something. No, ma'am. She already made the sentence. Okay, no problem. Tanisha, you can try the next one. बताइए. The fire made the water turn into hot misty air. क्या बोलेंगे? Hot misty air. Vapor जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पानी के ऊपर से जो वेपर निकलता है. Steam. Very good. Steam. Make a Actually, sentence, ma'am, Tanisha. I start speaking, but I was muted. Oh, no problem. No problem. Mute. बताइए. Okay, Steam से steam. बताइए. When I start boiling the water, so steam, it's become steam निकलना शुरू हो गया. So Started it steam. no, Started it started steaming. steam नहीं होगा. Steam is basically a noun. So it started steam नहीं हो सकता है. So when I started boiling water, It's become steam. No, started to rise. Okay, steam started to rise. Yeah, or ma'am. steam started rising. दोनों ही हो सकता है. Rising या to rise, whatever. Okay, good. Very Yes, nice, ma'am. Tanisha. Okay, Thank after Tanisha, who wants to try? बताइए. Anupam, would you like to try? Yes, ma'am. बताइए अनुपम. The teacher told me to listen to and follow his rules. किसी के rules को follow करना is किसी के rules. S से शुरू होगा. बताइए. किसी के सामने झुक जाना. What will you say? SU. Submitted. Submit. Very good. Make a sentence with this, Anupam. Submit. Yes, ma'am. I am submitting. I am submitting. In front my God. Submitting in front of my God. God. Very good. Very good. Absolutely correct. Anupam, बहुत अच्छे. Very good sentence. Thank you, Okay. ma'am. Thank Absolutely correct. Yes, Kumar, do you have a question? Ma'am, what was the meaning क्या ma'am. हुआ उसका? Is there I any was difference, ma'am? Bow down or submitting, ma'am? Yes, bow down का मतलब है अगर metaphorically बोल रहे हैं तो submit हो सकता है मतलब, but it can also literally meaning कि bow down करना, right? Submit करने का मतलब होता है always metaphoric, right? ऐसा नहीं है कि आप bodily submit कर रहे हैं. It can be like आप उनके सामने पूरी तरीके से झुक रहे हैं, right? Like your inner self is Agree, submitting. ma'am. Being agree. Not agreeing. Agreeing is different. किसी के साथ एक मत होना और किसी के सामने झुकने में बहुत डिफरेंस है. मे बी मैं किसी ने मुझसे बोला है कोई चीज जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे सबमिट करना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, राइट? अग्री करने का मतलब होता है कि मैं उनसे अग्री कर रही हूँ. Okay, ma'am. ओके. सबमिशन डज नॉट ऑलवेज हैव टू कम आउट ऑफ फ्री विल. ऐसा नहीं है कि अगर मैं सबमिट कर रही हूँ तो मैं जानबूझकर चाहकर कर रही हूँ. मैं भी जबरदस्ती कर रही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. The word is used rarely, so yes, it is very rarely used. Very rarely used, especially used for like very higher authority. आपसे बहुत higher authority है तब जाकर आप submit use करते हैं, right? Otherwise you don't. Or the people use surrender or something. Yes, surrender or submit, right? Exactly. My question is, Yes, when I Tanisha? made sentence, I start boiling water. Ma'am, da nahi aayega. I was starting boiling the water. What is that? The आएगा कि नहीं? I am confused, ma'am. नहीं आएगा. Whenever I am not writing the because आपके बारे में particularly नहीं बोला गया है. Normal एक sentence है कि whenever you start boiling water, vapor और steam starts to rise. मतलब जब भी आप गर्म करते हैं पानी तो वेपर निकलना शुरू हो जाता है. Okay? Okay, ma'am.
Thank So you. जब simple ऐसे general truths होते हैं उसमें हम द नहीं लगाते हैं. Okay, Okay, ma'am. Tanisha. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, most welcome. चलिए, so we will stop here, guys. I'll see you guys at 6 p.m. for our speaking class. Bye bye. Take care, guys. Thank you so much for joining. Bye bye, ma'am.